Hello students, come to lesson respiration. You have studied respiration, breathing in zoology, right? So in that lesson what you discussed is that in animals the process of respiration involves three steps. One is breathing, that is gaseous exchange. Second is tissue respiration and third is cellular respiration. ये chapter में हम cellular respiration सीखेंगे. Okay, now see what you know about animals is that breathing is merely a physical process in which air goes into lungs because of the activity of thoracic cage, right? The diaphragm. Second, once the oxygen-rich air is in lungs, it will go to blood via alveoli and blood carry oxygen to tissue. So capillaries allow diffusion of oxygen from the capillary to the tissue and tissue gives CO2 to the capillaries. So this is tissue respiration. And once glucose and oxygen are provided to the cell, within a cell the food is broken down to generate ATP. The process is called cellular respiration. Right now, when we talk about respiration, it is exactly opposite process of photosynthesis. So मैंने बोर्ड पे टोटल दोनों प्रोसेस आपको अच्छे से लिख के बताया है that what is energy transformation occurring in photosynthesis as well as in respiration. Because ultimately in both the process, the usable form of energy, ATP, is generated. Okay, obviously photosynthesis occurs in chloroplast, in eukaryotic photosynthetic cells, and aerobic respiration occurs in mitochondria in eukaryotic aerobic cells. Okay, but when we talk about energy transformation, like ये biological system में, ये planet पे energy transformation कैसे होता है? Then the ultimate source of energy for life on this planet is the sun. Ultimate source of energy is light. Light is collected by pigments. Okay, so all accessory pigment collect the energy, hand it over to reaction center. It is either P700 or P680. This energy goes to electron and electron follows ETS, electron transport system. Via ETS, ATP, NADPH are synthesized. Via ETS, ATP and NADPH are synthesized, which are energy-rich chemical collectively called assimilatory power. याद आ रहा है ना शब्द, right? So assimilatory power synthesized in grana goes in stroma and their dark reaction occur in which CO2 participates. CO2 is reduced to form glucose and glucose is stored in form of starch. Glucose is stored in form of starch. So starch is the stored food for plant, glycogen is the stored food for animals. Right? And it is kingdom specific. If you are talking about Monera, yeah, tell me what is the stored food. Okay, so these chemicals are specific to particular kingdom. आपने ध्यान में रखना है. Okay, so this is how the energy transformation occur in the process of photosynthesis. That is light to ATP and NADPH, which is a chemical form of energy. Right? इसको हम chemical energy का एक प्रकार बोल सकते हैं, which is readily usable. Okay, it is readily usable chemical form of energy. Okay, then this readily usable chemical form of energy is used to prepare glucose from CO2. It is used to prepare glucose from CO2. So CO2 का reduction होके glucose बनेगा. तो glucose is also a type of chemical energy, but which is not ready to use. Glucose will be broken down further in respiration to form ATP. Okay, so glucose is again readily usable form of stored food or readily usable form of chemical which gives ATP, and stored form of energy is considered as starch. Okay, so photosynthesis में क्या हो रहा है? Light energy is converted to chemical energy. Light energy is converted to chemical energy, and now all we heterotrophs consume plant and use the energy which is stored in form of food. Okay, so अब देखो food शब्द. What is food? Food is a complex organic compound which is rich with energy. Okay, उसमें का best form कौन सा है? तो वो है glucose.
एक्सेस ग्लूकोज स्टोर होगा स्टार्च फॉर्म में। स्टार्च कौन से प्रकार का केमिकल है? कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, स्टार्च, they are all polysaccharides, right? Okay, so that is what is carbohydrate is readily usable form of energy. It is अब देखो readily usable form बोलेंगे तो थोड़ा आपको हमेशा confusion होगा। So देखो instant form of usable energy is ATP. Okay, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे लाइफ में एनर्जी, पैसा कौन से फॉर्म में है? रुपीज, इंस्टेंट, यू कैन पे इट एनी टाइम। वैसे एटीपी है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, कहीं पे भी दे सकते हो। 2 रुपए की चाय पी सकते हो, ब्रेकफास्ट कर सकते हो, सोना खरीद सकते हो, चाहे तो रियल एस्टेट भी खरीद सकते हो। तो रेडिबली यूजेबल फॉर्म ऑफ करेंसी इज रुपी। ओके, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में रुपी जैसा क्या है? एटीपी। ओके, देन हमारे पास गोल्ड होता है। गोल्ड इज लाइक ग्लूकोज, जो सेल आउट करना आसान है। ठीक है, अभी अगर आप सोचे कि चलो गोल्ड बेचना है तो आप इमीडिएटली गोल्ड स्मिथ पे जहां जाके उसको बेच के पैसा कर सकते हो। तो ग्लूकोज इज लाइक दैट विच गिव्स यू एटीपी रेडी। एंड ऑल दिस फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन आर लाइक रियल एस्टेट, जो बेचने में आपको दिक्कत जाएगी। दिस फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट जो बेचने में आपको दिक्कत जाएगी। ठीक है, वो डिसॉल्व करने में आपको दिक्कत जाएगी। सो दीज आर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये तीनों स्टोर्ड फॉर्म में, अगर आपके बॉडी में तीनों स्टोर्ड फॉर्म है तो उसमें से एट प्रायोरिटी आप कार्बोहाइड्रेट यूज करेंगे, सेकंड प्रायोरिटी आप फैट यूज करेंगे और थर्ड प्रायोरिटी आप प्रोटीन यूज करेंगे। ओके, सो ऑलवेज से स्टोर्ड फूड इज इन फॉर्म ऑफ इज इन 3 फॉर्म्स: carbohydrate, fats, protein. This sequence is on the basis of the priority given by your body for synthesis of ATP. समझ रहे हो? राइट? तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट खुद का फूड बनाता है। अब ये फूड जो उसने खुद बनाया वो खुद खाएगा, ओके, खुद ब्रेक डाउन करेगा, फिर से एटीपी बनाएगा और जो चाहिए वो काम करेगा। तो प्लांट का फूड भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन है। एनिमल्स का फूड भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन है। So what we do, what plant do when they break down this food? So this is happening within the cell, that is cellular respiration. Okay, so cellular respiration, preferred substrate carbohydrate, okay, is oxidized. If carbohydrate is not available, fats will be broken down. If fats are not also available, proteins are degraded. Right? Okay, so all these energy rich chemical, first priority, second priority, third priority, we call as a food. Complex organic compound rich in chemical energy is called food. Are oxidized for oxygen, for oxidation, atmospheric oxygen is used. The process is called aerobic respiration. If atmospheric oxygen is not used, then the process is called anaerobic respiration. So whatever, aerobic respiration रहे, anaerobic respiration रहे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड का ऑक्सीडेशन होगा। कैसे? बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। So complex organic compound will give out hydrogen in presence of oxygen or in absence of oxygen. Removal of hydrogen is nothing but oxidation, and by this oxidation the energy rich bonds are broken down. Energy rich bonds are broken down. This energy goes to electron again. This energy goes to electron. Electron perform ETS. Electron perform ETS, and ETS generates ATP. ETS generates ATP. This process is common in plant, animal, fungi, bacteria, everything. Right? So as I said, this is again a one lesson of zoology because it involves everything which is found in animals. Okay? So animal cell में mitochondria में, plant cell में mitochondria में ये process होगा, ETS होगी और ETS में ATP बनेंगे। ये ATP टोटल मेटाबॉलिज्म के लिए अवेलेबल रहेंगे। ये एटीपी टोटल मेटाबॉलिज्म के लिए अवेलेबल रहेंगे। सो इट माइट बी ग्रोथ, ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा। ओके, ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन हो सकता है, राइट? ओके, ग्रोथ के लिए कुछ केमिकल का सिंथेसिस भी हो सकता है। ओके, सो मैकेनिकल वर्क डन, मसल पावर, ओके, इट मे बी डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस यू कंडक्ट,
and it may be even thinking process in animals. Okay, so obviously thinking process, brain is not there in plant. Okay, so plant में thinking छोड़ के ये सब चीजों के लिए muscle power भी नहीं लगेगा because plants don't move. Okay, so plants as well as animal perform same type of respiration, aerobic respiration. Yeast, some anaerobes perform respiration, but it is in absence of oxygen. It is slightly different than aerobic respiration. But in any process, it may be respiration of plant, respiration of animal, it may be aerobic respiration, anaerobic respiration. The process of energy transformation is the same, in which ATP are synthesized and ATP are available for different metabolic activities, right? But in plant, locomotion and nervous coordination is not there, which is energy consuming process. Okay, so यहाँ पे देखो, plants में लोकोमोशन नहीं है, ब्रेन नहीं है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है. एनिमल्स में ब्रेन है, लोकोमोशन है, तो एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा है. So this is what is respiration comparison between plants and animals. So as we are comparing the process of respiration in plant and animal, first two basic steps are different. Which are they? You have studied the process of breathing, gaseous exchange in 11th for animals. So what was the first step? Is breathing. Okay, if I'm talking about mammals, the diaphragm is straight or getting dome shaped. This change in shape of the diaphragm is causing thoracic cage to expand or thoracic cage to collapse. जैसे thoracic cage expand होगा, तो atmospheric pressure will be more than the thoracic cage. So air obviously diffusing from its higher pressure to its lower pressure. Your lungs will be full of air. Okay, you are lucky enough that you are having, till now you are having fresh air to breathe. Okay, so oxygen rich air will enter in your lungs. It will diffuse in alveoli. Alveoli will give this oxygen to the blood. Here will be gaseous exchange. Blood will get oxygen, and from the blood CO2 will come to alveoli. Now this RBC, which is containing hemoglobin, which is oxygen carrier chemical. This oxygen carrying chemical, hemoglobin plus oxygen, we call it as oxyhemoglobin, will run because of pumping of heart. Okay, देखो याद करो, circulatory system के साथ respiratory system. Because of pumping of heart, it will run. RBC, क्यों? RBC का काम है ऑक्सीजन बांटना. It's not consuming oxygen. RBC is performing anaerobic respiration because it doesn't have the organelle mitochondria, which is site of aerobic respiration. Okay, देखो बॉडी मैकेनिज्म कितना वंडरफुल है. आरबीसी का काम है ऑक्सीजन बांटना, तो उसने खुद ऑक्सीजन खाना नहीं है, राइट? सो खुद ऑक्सीजन कंज्यूम ना करे, उसके पास हीमोग्लोबिन कैरी करने के लिए ज्यादा जगह हो, तो इसने अपना न्यूक्लियस हटा दिया. Nucleus disappear after maturity. It doesn't have mitochondria, so it has ample space, abundant space to load the hemoglobin. Hemoglobin is converted to oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin rich RBC will run because of pumping of heart, and itself it is not consuming oxygen because RBC perform anaerobic respiration. Okay, so this is what we have discussed in 11th. Now what happened next? You studied in the 11th is that oxygen-rich RBC run and come in contact with tissue. It comes in contact with tissue, and now there is again diffusion of gases. Oxyhemoglobin will give oxygen to the cell, and the cell will give CO2 to the hemoglobin, right? And it will be now carboxyhemoglobin carrying the CO2 from the cell to the lungs. Now the oxygen is in the cell. To burn what? Food. Cell को food किसने दिया? Obviously blood दिया. Blood is a media in our body. Okay. So what is the job of blood? Is to carry oxygen, hormones, chemical, waste, CO2, O2, right? So everything is like connective tissue connecting all the things in our body. So blood ने हर सेल को फूड दिया, हर सेल को ऑक्सीजन दिया,
and now within a cell the respiration starts. This is what is cellular respiration, and this lesson which is actually common for plants as well as animal. So ये chapter को मैं zoology का chapter भी बोल सकती हूँ. Okay, so cellular respiration is common in plant cell, animal cell, yeast, fungus, microorganism, and you will discuss in detail in any branch of biology. फार्मैक में जाओ, कौन से भी मेडिसिन, होम्योपैथ रहे, ओके, आपका इवन इट मे बी इवन अ ट्रेनर, ओके, जो प्लेयर्स को करता है, एवरीवेयर दे टॉक अबाउट हाउ टू रेस्पायरेट, how to breathe in, okay, वो पूरे breathing की exercise and all, it is all related to this. So this is again a lesson of zoology. Okay, cellular respiration, which is common in plant as well as animal. Right? Okay, so let us have introduction of the topic. We are on page number 226. Please take out NCERT. 226, respiration in plant. Okay, यहाँ पे लिख लो oblique करके animals. Same process occur in animal cells. Cellular respiration is common in plant cell and animal cell. It starts, if I'm talking about aerobic respiration, देखो last year chapter cell में हमने mitochondria का structure देखा था. Mitochondria is site of aerobic respiration, which is present in animal cell, plant cell, fungal cell, and all eukaryotic, which are aerobic organism, have mitochondria. Okay, aerobic respiration perform 3 steps: glycolysis, TCA, and ETS. Glycolysis occur in cell cytoplasm. ETS and TCA occur in the mitochondria. So these 3 steps are common in plant cell and animal cell. So we'll discuss in detail कि ये process plant cell में कैसी होती है, animal cell में कैसे होती है, कितने ATP बनते हैं और क्या-क्या उनमें थोड़ा सा जो बदलाव है वो भी है. So this is a lesson which is common for plant as well as animal and very important for you MBBS. Right? So it is total physiology part. Okay, see. All of us breathe to live, but why is breathing so essential to life? Okay, breathing रुक गया, life गया. Right? If someone is suffocated, the life will end within few seconds. So oxygen, breathing, respiration is very essential and performed by all living cells 24/7. Okay, so breathing is so essential for life. What happens when we breathe? Also, do all living organisms, including plants and microbes, breathe? If so, how? ये जो breathing की process है कैसे होती है? अभी मैंने animal की समझाई. Your diaphragm is becoming dome shaped and stressed. This change in shape of the diaphragm is causing change in thoracic cage, and accordingly the gases diffuse. It is happening in animal. If it is a plant, then lenticels present on woody plant part are exchanging gases for respiration, and CO2 is given out, O2 is taken in. But stomata, which are open during day for photosynthesis and closed during night, लेकिन रात को स्टोमेटा बंद होने के बावजूद रेस्पिरेशन चल ही रहा है. All living cell respire 24/7. So remember, in night, green leaf cells, all living plant cell respire. All living plant cell respire day as well as night, 24/7. 24 घंटे, पूरे हफ्ते के 7 दिन प्लांट के लिविंग सेल रेस्पिरेशन करेंगे. कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में. क्या बनाएंगे? एटीपी. सेम थिंग ट्रू फॉर एनिमल सेल. एनिमल सेल 24/7 रेस्पायर व्हेन इट इज अ लिविंग सेल. अब आप बोलेंगे डेड सेल क्या है? योर नेल्स आर डेड सेल, योर हेयर्स आर डेड. हेयर का फॉलिकल नीचे का जिंदा है, ऊपर का डेड है. Right? Okay, so all living plant cell, animal cell respire 24/7, may be performing aerobic respiration or anaerobic respiration so as to release energy, and energy is given out in form of ATP. In animal, the first step is of breathing, and in plant is gaseous exchange through lenticel or even closed stomata. रात को स्टोमेटा बंद है, लेकिन क्लोज स्टोमेटा से भी उतना ऑक्सीजन जाएगा जो रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है. Right? So stomatal opening closing is no way related to the process of respiration.
oxygen needed for respiration can go through closed stomata even, and the process will continue. Okay, so see now. All living organisms need energy for carrying out daily life activities. It may be absorption, transportation, movement, reproduction. So here what I wrote, ATP's energy is used for metabolism. So metabolism is all these. Okay, it is absorption, transportation, movement, reproduction और even breathing. आप डायफ्राम हिलाते हो तो उसके लिए मसल यूज होते हैं. मसल को एनर्जी कौन देता है? एटीपी देता है. एटीपी कहाँ से आया? ये पूरा जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा, ये प्रोसेस कौन सा है? रेस्पिरेशन. So muscle power is also requiring energy coming by the process of respiration. See, where does all this energy come from? We know we eat food for energy, but how is the energy taken from the food? हाँ, आपने फूड खा लिया, लेकिन फूड से एनर्जी बाहर आई कैसे? आपने एटीपी बनाया कैसे? ये पूरा प्रोसेस हम रेस्पिरेशन में सीखेंगे. हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज्ड? डू ऑल फूड हैव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी? Just now we said carbohydrate, fat, protein are the three types of food. So does they have same amount of energy per gram? No. So energy content also differ. Do plants eat? Plant खाते हैं क्या? Plant बाहर से food नहीं खाते. Plant CO2 water अंदर लेके खुद का फूड अंदर बना के उसी को अंदर स्टोर करके जब चाहिए तब खाते हैं. Right? Okay. So plant use CO2 water, which is raw material for preparation of food. The food for plant is carbohydrate, fat, protein, which is product of photosynthesis, and it is stored in godowns. So plant में गोडाउन क्या क्या है? सीड में एंडोस्पर्म है, सीड में कॉटिलडॉन है, फ्लेशी लीव्स है, पोटैटो ट्यूबर है, राइट? ओके, देन फ्रूट है. बट फ्रूट में जो फूड होता है वो हेट्रोटॉप्स के लिए रिश्वत है. मॉर्फोलॉजी में सीखा आपने. एंजियोस्पर्म वांट सीड डिस्पर्सल. सो सीड डिस्पर्स करने के लिए ममा प्लांट ने व्हीकल अरेंज किया. व्हाट वाज दैट? सीड. तो सीड क्या करेगी? सीड के ऊपर कवरिंग है फ्रूट का, उसको एडिबल करा दो तो हेट्रोट्रॉप्स वो फ्रूट खाने के लिए जाएंगे और सीड डिस्पर्स करेंगे. सो प्लांट इज अ वंडरफुल प्रोसेस. प्लांट की अगर लाइफ प्रोसेस आप देखेंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड दैट हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर, हाउ अडेप्टिव दे आर, एंड दे हैव कंटिन्यूअस ability of evolution, so they can grow anywhere efficiently. Okay, so bottom line, cellular respiration, plant respiration is same. Plant prepare their own food and the food is eaten up by them. Energy is released and that energy is utilized for the process of metabolism. For their energy requirement, do they eat food? They prepare their food and consume it. You may wonder at several questions raised above. They may seem to be very disconnected, but it is really the process of breathing is very much connected to the process of release of energy from food. Let us try to understand how it happens. Respiration कैसा होता है? Let us see. All the energy required for life process is obtained by oxidation of some macromolecule that we all call food. Only green plants and cyanobacteria can prepare their own food. All green plant parts are photosautotrophs and cyanobacteria are photoautotrophs. We have discussed it in biological classification. By this process of photosynthesis, they trap light energy and convert it into chemical energy. Light energy is converted to chemical energy that is stored in the form of bonds of carbohydrate. ये बॉन्ड एनर्जी केमिकल में जो अभी हमने बोला था कि एनर्जी रिच बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी बाहर निकलती है, तो यहाँ पे एनर्जी रिच बॉन्ड बनता है. एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करके, उनकी एनर्जी यूज करके एनर्जी रिच बॉन्ड बनता है. वो एनर्जी रिच बॉन्ड फूड में है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज विच इज अ मोनोसैकेराइड, सुक्रोज इज अ डायसैकेराइड एंड स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड. So immediate product of photosynthesis, glucose. Glucose is transported in form of sucrose and it is stored in form of starch in plants. We must remember that in green plant too, not all cell, tissue and organ photosynthesizes. Okay, plant में सबके सब
लिविंग सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करते. ओनली सेल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट that are most often located in the superficial layers carry out photosynthesis. Why superficial area? क्योंकि सनलाइट जहां पे अवेलेबल है उसी पे फोटोसिंथेसिस होगा. Deep inside tissue doesn't have any sunlight, so it won't have any chloroplast. So superficial cellular layer which is getting sunlight will perform the process of photosynthesis. Hence, even in green plant, all other organ, tissue and cell that are non-green need food for oxidation. Hence, food has to be translocated to non-green plant part. लीफ में फूड बनेगा, सुक्रोज के फॉर्म में नॉन ग्रीन प्लांट पार्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा. वहां पर जितना चाहिए उतना यूज होगा. जो बचेगा वो गोडाउन में जाके स्टोर होगा. व्हाट आर द गोडाउन? It may be fleshy leaf, fleshy stem, it may be fruit, it may be endosperm of the seed. Right? So seed food होगा, store होगा. कहाँ पे? As I said, fruit, फिर endosperm of the seed, it may be fleshy stem, fleshy root, right? And it may be in other succulent leaf-like structures. So food is stored. Hence, even in green plants, all other organs, tissue and cells that are non-green need food for oxidation. जैसे adaptability है, लीफ फोटोसिंथेसिस करेंगे, रूट वाटर सक करेंगे, स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज करेंगे, स्टेम सपोर्ट देगा. कॉम्प्लीमेंट्री ना, सब ऑर्गन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, सपोर्टिव है, अपने अपने क्षमता के अनुसार काम करते हैं, बट कलेक्टिवली एक इंडिविजुअल प्लांट बनाते हैं जो कंप्लीटली फिट ऑर्गेनिज्म है. Animals are heterotrophs, that is, they contain food from animal. So plant require ready-made food. Plant prepare food, animal require ready-made food. That's why we are heterotrophs. Animals are heterotrophs, that is, they obtain food from plant directly herbivore और indirectly carnivore. अगर आप डायरेक्टली प्लांट खाते हो तो आप हर्बीवोर है. अगर आप प्लांट को खाने वाली मुर्गी खाते हो तो आप इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है. राइट? Saprophyte like fungi are dependent on dead and decaying organic matter. एनिमल के प्लांट जो भी मर गया उसके सेल में जो एनर्जी है उसको डेड टिश्यू के केमिकल को डाइजेस्ट करके फूड बना, अपना एटीपी बनाने वाला, डेड टिश्यू को फूड बना के खुद के एटीपी बनाने वाला ऑर्गेनिज्म सैप्रोफाइट. What is important to recognize is that ultimately all the food that is required for life processes comes from photosynthesis. Entire food product is coming from photosynthesis. This chapter deals with cellular respiration or the mechanism of breaking of this energy for synthesis of ATP. How this energy, फूड के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कैसे ऑक्सीडाइज करके एनर्जी एटीपी बनाने में रिलीज होती है. सो विल डिस्कस दिस ऑक्सीडेशन, ETS and formation of ATP. Photosynthesis of course takes place within the chloroplast in eukaryote, wherein breakdown of complex molecule to yield takes place in cytoplasm or in mitochondria. If it is a eukaryotic cell, aerobic respiration starts in cytoplasm and completed in mitochondria. The breaking of the CC bonds of complex compounds through oxidation within the cells, leading to release of carbohydrates through oxidation within the cell. कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब उनसे हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, एनर्जी रिच बॉन्ड टूटेगा, तो ऑब्वियसली वो एनर्जी रिच बॉन्ड जो टूटने के बाद एटीपी बनाएंगे. द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस आर नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. जो कंपाउंड का, जैसे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो रहा है तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन है. हमने प्रायोरिटी भी देख ली, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन. यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी, बट प्रोटीन्स, फैट्स आर इवन organic acids can be used as respiratory substrate in some plant. ये सब केमिकल प्लांट के पास होते हैं, लेकिन प्रायोरिटी अलग है. At high priority, carbohydrate, second fat, third protein. Right? This is what is priority wise the food is oxidized and ATP are synthesized. See,
Usually carbohydrates are oxidized to release energy, but protein, fat, even organic acid can be used as a respiratory substrate in some plants under certain conditions. Due to oxidation within a cell, all the energy contained in respiratory substrates is not released free into a cell, or it is a single step. It is released in a series of low stepwise reaction controlled by enzymes. ये जो ETS है, you know electron transport system, cyclic, non-cyclic, energy is released in a stepwise manner, and the sufficient energy is used for trapping preparing ATP. Okay, so this is what they just wrote in one line. During oxidation within the cell, all energy contained in respiratory substrate is not released. ग्लूकोज में 686 किलो कैलोरीज एनर्जी है, 686, लेकिन उसमें से सिर्फ 292 इतनी कम एनर्जी एटीपी बनाने में यूज होती है, बाकी सब एनर्जी हीट एनर्जी बोल के लॉस होती है. So it's not that entire energy present in food is used for glucose formation, food formation. It may be wasted or it may be used for other activities. During oxidation within a cell, all the energy contained in the respiratory substrate is not released free into a cell or in single enzyme, and it is trapped as a chemical energy in the form of ATP. ये जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी वो एटीपी के फॉर्म में ट्रैप हो जाएगी. Hence, it is important to understand that the energy released by the oxidation in respiration is not, or rather cannot be used directly, but is used to synthesize ATP, which is broken down whenever and what energy is required. जहाँ पे भी कभी भी जब भी आपको एनर्जी लगे तो फूड को ऑक्सीडाइज करके आप एटीपी बनाओगे. This energy trapped in ATP is utilized in various energy requiring processes of organism. ये एनर्जी हमको अलग अलग ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटीज करने के लिए लगेगी, एंड द कार्बन सिलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज्ड एज अ प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल. रेस्पिरेशन में आप जो भी केमिकल बनाते हो वो रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स, व्हाट आर दे कॉल्ड? रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स. These respiratory intermediates will be again converted to chemical, and because of their experience and all, it will work nicely as a food. Got it? Okay, so this is totally introduction of plant respiration and animal respiration. So, do plants breathe? Breathing, as we say, is a physical process in which the atmospheric oxygen, atmospheric air is taken in, and oxygen is used for burning of food. But as we said, in animal, the process of respiration involves 3 steps: breathing, tissue respiration, cellular respiration. अब एनिमल में ये होता है, ये आप जानते हो. ठीक है, सिर्फ सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्लांट और एनिमल का सेम है, जो ये चैप्टर में सीखेंगे. सो इट इज अ लेसन ऑफ बॉटनी एज वेल एज zoology. Okay, so what happens in plant is gaseous exchange is occurring through either stomata, lenticels, and it merely diffuses. Okay, अब अच्छे से कंपेयर करो. See, you know respiratory system in cockroach, respiratory system in mammals. Even you have discussed all these points related to respiration. In unicellular organism, respiration occur with the help of plasma membrane. Right? Then in aquatic plant, animals, it occurs through gills. In amphibians, it occurs through skin. And in other evolved organisms, we are having windpipe. ठीक है, लेकिन अब कॉकरोच के पास भी विंड पाइप है, जिसमें बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन अलग होगा और विंड पाइप अलग रहेंगे. एनिमल्स में, particularly mammals में, what we know that we have only one circulatory system, which is having a body fluid. Okay, and body fluid is carrying all the needful things. It may be CO2, it may be O2, it may be even temperature. Okay, it may be hormone, it may be excreta, it may be waste material. So all that is transported via blood. And one more thing you have studied in humans is lymphatic system, right? Okay, so which is mainly dealing with your resistance to pathogen and collection of lymph in our body. ठीक है, तो ये पूरा जो सर्कुलेशन है, इसमें गैसेस का सर्कुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है,
because gases are giving oxygen for burning the food. अच्छे से समझो, आपके बॉडी में फूड भी है, आपने खाना भी खाया, आपके पास ब्लड भी है, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो फूड को जला के आप एटीपी नहीं बना पाओगे, तो धीरे 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 सेल्स मरने लगेंगे और सबसे पहले डैमेज कॉजिंग ऑर्गन जिसको ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से डैमेज होता है, दैट इज योर ब्रेन. अंडरस्टूड? करेक्ट. सो ऑक्सीजन इज प्राइमरीली रिक्वायर्ड. ओके, तो एनिमल्स में इस तरह से होता है, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में है. तो प्लांट्स में क्या होता है? You know, aerial plant part is in contact directly with air, and even root system is in contact with air because porous soil is healthy for the plant. If your soil is waterlogged, then the roots are not getting oxygen, and if anaerobic respiration is there, the efficiency of the plant drops. Okay, so what is other one? What is other thing you have studied in morphology? Is nematophores. Okay, so nematophores are the breathing roots. What are nematophores? Breathing roots. Because these plants, which we call mangrove plants, are having respiratory roots, and normal roots are in the soil, which are for absorption of water and for support. अब इनके breathing root air में क्यों आए? Nematophores are positively phototropic, negatively geotropic. Okay, why so? Because water-logged soil में gases नहीं है, तो respiration के लिए दिक्कत होगी. तो प्लांट ने अलग से ब्रीदिंग रूट्स ही बना लिए, निमेटोफोर्स बना लिए. समझ रहे हो? तो रेस्पिरेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, एंड प्लांट ऑर्गन आर इन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द एयर, एंड द एयर इज डिफ्यूजिंग इन, नियरली डिफ्यूजिंग इन with the help of stomata, lenticels. Lenticels are present on woody plant part, even they are present on nematophores. Gases diffuse in. Okay, अब देखो एनाटॉमी याद करो. लेंटिसल से स्टोमेटा से गैसेस अंदर गए, इंटरसेल्युलर स्पेसेस में गैसेस डिफ्यूज हुए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर गए, राइट, और वहां पे ऑक्सीजन ने केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया. ओके, सो प्लांट्स में ये डिफ्यूजन जो एक्चुअली बहुत स्लो है, डिफ्यूजन इन प्लांट्स इज वेरी स्लो, रादर डिफ्यूजन प्रोसेस इज स्लो. इट इज नॉट गिविंग सफिशिएंट ऑक्सीजन टू जनरेट द अमाउंट ऑफ एटीपी रिक्वायर्ड. ओके, सो जस्ट इमेजिन करो, अगर आपको डिफ्यूजन द्वारा एनिमल्स आपके जैसे, ओके, हमारे जैसे मैमल्स को डिफ्यूजन द्वारा रेस्पिरेशन करना पड़ता था, तो हमारे बॉडी को कौन सा अडेप्टेशन चाहिए होता? एज आई टोल्ड यू, बिकॉज एनिमल्स हैव ब्रेन एंड लोकोमोशन. ओके, वेट लेके घूमते हैं लोग, तो 100 kg लेके घूमते हो तो कितना मसल पावर लगता है. ओके, so for that your ATP demand is more, for movement ATP demand is more, and one more thing, brain consumes maximum energy. पढ़ते हो तो देखो ऐसे फटीग आता है, आराम से एसी में बैठे हो, लैपटॉप के सामने बैठे हो, राइट, फिर भी 2 घंटा 3 घंटा अगर टीचर लोगों ने ब्रेन खा लिया तो कैसे एग्जॉस्टेड फील करते हो, बिकॉज योर ब्रेन रिक्वायर मैक्सिमम एटीपी. समझ रहे हो ना? तो उसके लिए एटीपी अगर इफिशिएंटली बनाना है तो ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा चाहिए. ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा चाहिए तो डिफ्यूजन का रेट ज्यादा चाहिए. डिफ्यूजन का रेट ज्यादा चाहिए तो डिफ्यूजन के लिए सरफेस एरिया चाहिए. Okay, you must be knowing that your lungs are having, lungs के पूरे alveoli का अगर सरफेस एरिया निकाला तो सरफेस एरिया लॉन टेनिस के कोर्ट जितना है. कैन यू इमेजिन? कभी खड़े हो लॉन टेनिस के कोर्ट पे खड़े रह के देखना. ओके, इतना बड़ा कोर्ट होता है. सो व्हेन यू ब्रीथ इन, लॉन टेनिस के कोर्ट के सरफेस से एयर कैपिलरीज में जाती है, एंड व्हेन यू एक्सहेल आउट उतने ही सरफेस एरिया से CO2 ब्लड में आता है. So, because of this huge surface area, the availability of oxygen because of lungs is fulfilled. अगर लंग नहीं होते थे, हमको अगर प्लांट जैसा रेस्पिरेशन करना पड़ता था सरफेस द्वारा, तो वो कंडीशन में हमको ऐसे डिवाइस बनाने पड़ते थे जो लॉन टेनिस के कोर्ट जितने हो और उसमें से एयर फिल्टर हो. Okay, just imagine you are sitting here in the classroom, 100 students are there with 100 tennis courts, okay, allowing gaseous exchange. Is it practically possible? No. Okay, so this is how animals' energy demand, ATP demand is much higher than plant. Okay, और एक बात एनाटॉमी में सीखी है हमने, प्लांट के पास डेड टिश्यू भरे पड़े हैं. okay, डेड टिश्यू बहुत है प्लांट के पास. डेड टिश्यू
प्लांट के लिए काम करते रहते हैं, डेड टिश्यू प्लांट के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन उनको एटीपी एनर्जी फूड नहीं लगता। Isn't it good for plant? हमारे पास डेड टिश्यू नहीं है, बिकॉज अगर डेड टिश्यू एक्यूमुलेट करेंगे तो दिन ब दिन वेट बढ़ेगा, और वेट बढ़ेगा तो मूवमेंट के लिए प्रॉब्लम होगा। Okay, so remember, plants don't have respiratory system, plants don't have excretory system, इनके पास vacuoles है। Plants don't have skeletal system, they have only xylem phloem and each cell has cell wall। समझ रहे हो? Each cell has cell wall, so mechanical strength आ जाएगा। Understood, right? So this is how plant and animal system differ with respect to the process of respiration and other mechanisms। Okay, so plant में जो plant part air के contact में है, all the plant part which are in contact with air allow diffusion of gases through intercellular gaps, the gases diffusion, and that is sufficient for respiration। So देखो, epidermis, cortex, endodermis, pericycle, phloem, cambium, xylem, pith, यहाँ तक पूरे गैसेस डिफ्यूज होंगे जो हमने एनाटॉमी में देखा। ओके, सो इंटरसेल्युलर गैप्स यहाँ पे मदद करेंगी, लिविंग सेल्स यहाँ पे मदद करेंगे, राइट? दिस इज रिगार्डिंग ब्रीदिंग इन प्लांट। ओके, कॉकरोच जैसे एनिमल में विंड पाइप अलग रहेंगे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, और एवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म में गिल्स एंड देन लंग्स द्वारा रेस्पिरेशन होगा, right? Okay, so this is comparison between breathing of plant and animal. So this is all given in a similar way in NCERT. So we are on page number 227. Do plants breathe? Well, the answer to this question is not quite so direct. Okay, हमारे बॉडी में जैसे दिखता है, you breathe in, you breathe out, ऐसे प्लांट पे नहीं दिखेगा। स्लोली डिफ्यूजन चलता रहता है, क्वाइटली चलता रहता है। Okay, so it is there but not clearly visible, so it is not quite so direct। Okay, so इतना clear breathing हमको plant में नहीं दिखता। Yes, plant require O2 for respiration to occur and they also give out CO2। Plant do respire, all living cell respire 24/7 except dormant cells। Okay, अब dormant से क्या होती है plant growth में देखेंगे, लेकिन what is a dormant cell? आप जो घर में सीड्स लाके रखते हो ना, गेहूं, जवार, बाजरी खाने के लिए लाके रखते हो ना, these are the seeds which are living। अगर आप उठा के जमीन पे डालते हो तो they have ability to germinate, means it is living but respiring negligible। Okay, so what I said, all living cells respire 24/7 except dormant cells। Okay, see now, hence plants have system in place that ensures the availability of oxygen। Plants, unlike animal, have no specialized organ for gaseous exchange। Animal के पास specialized organ है, ये देखो पूरा आप nose, nostrils, then trachea, then bronchi, lungs, alveoli पूरा सीख चुके हो। Okay, so that is what is there in animals, but it is not so in plants। just stomata, lenticels है, और बाकी जो मैंने लेयर बोले epidermis, cortex, endodermis, इसके द्वारा एयर डिफ्यूज होंगे। There are several reasons why plant can get along without respiratory organs। Okay, different reasons why plant don't have evolved respiratory system, because non-motile, don't have nervous coordination, don't have brain, all living cells number is less, their energy demand is less। Okay, so special respiratory system होने की उनको जरूरत नहीं है। First, each plant part take care of its own gaseous exchange needs। ये सेल को ऑक्सीजन चाहिए, वो हवा से ले लेगा, ये सेल को चाहिए, ये ले लेगा। हमारे पास वैसा नहीं है। Your skin is exposed to air, but it's not taking gases from air। Your lung is providing it with the help of circulatory system, that is blood। Okay, see, there is very little transport of gases from one plant part to other। Second, plants do not present great demand for gaseous exchange। Roots, stem, leaves respire at rates far lower than animal do। Rate of respiration in plant organ is very low as compared to animal। Only during photosynthesis, large volume of gases are exchanged।
फोटोसिंथेसिस में जब स्टोमाटा खुलते हैं तो ample amount of gases enter in and CO2 participate in the photosynthesis. When cells photosynthesize, availability of O2 is not a problem in these cells since oxygen is released within the cells. Distance that gases must diffuse even in large bulky plant is not great. देखिए प्लांट कितना भी बड़ा रहे तो रूट से ऊपर या ऊपर से नीचे गैसेस नहीं आते, वही के वही ओके, बिकॉज एरियल प्लांट पार्ट इज देयर ओके. सॉइल में भी जो पोरस सॉइल होती है वहां से रूट गैसेस ले लेंगे, सो गैसेस डोंट ट्रैवल मच डिस्टेंस इन प्लांट. Each living cell in plant is located quite close to the surface of the plant. This is true for leaves. You may ask, but what about thick woody stem and root? In stem, living cells are organized in a thin layers inside and breathe the bark. Bark पे जो lenticels होते हैं उसके द्वारा breathing होता है. They also have opening called lenticels. The cells in the interior are dead and provide only mechanical support. Heartwood. Okay, जैसे diameter बढ़ेगा तो centrally located pith मर जाता है और secondary xylem जो center core बनता है heartwood is dead, so it doesn't require oxygen, right? They also have opening called lenticels. The cells in the interior are dead and provide only mechanical support. For example, for example, heartwood. Thus, most of the cells of a plant have at least a part of their surface in contact with air. This is also facilitated by loose packaging of parenchyma cells in the leaves. Okay, leaves में देखो parenchyma cells है, they are loosely packed, allowing easy gaseous diffusion. Leaves, stem and roots which provide an interconnected network of air spaces. Okay, because of leaves arrangement of parenchyma, air spaces are in connection with each other and air can diffuse it. The complete combustion of glucose which produce CO2 and water as end product which yields energy, most of which is given out as heat. Okay, so ये heat को underline करो और most को underline करो. This is now cellular respiration जो अब हम शुरू करेंगे. Okay, so I repeat. Complete combustion of glucose. What is combustion? जिनको नहीं समझ में आ रहा है लिख लो burning. Complete combustion of glucose which produce CO2 and water as end product yields energy. Okay, ये respiration की प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जलता है, combustion होता है, एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज दो फॉर्म में होती है. ग्लूकोज की एनर्जी दो फॉर्म में रिलीज होती है, वन इज हीट एंड अदर इज एटीपी. इसमें से ज्यादा क्या है? मोस्ट ऑफ द रिलीज्ड एनर्जी इज हीट. सो हाउ दिस सेलुलर रेस्पिरेशन occurs we'll see in detail, which is common in plants as well as animals.